Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are back with the exercises of chapter number 13. Chapter number 13 was testing sets of conditions, upon which we have created a video that's also part of this playlist. So before continuing with the exercises, I would suggest that you first give a shot to the theoretical aspect or the chapter video uh, for chapter number 13, where I'm explaining the concepts. So firstly, you should grab the concepts and then uh, move along with the exercises. Otherwise, आप डायरेक्ट भी ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं. I will try to explain a little bit the concepts as well. So let's begin with the first one. And it says type the operator that means and. तो and operator के लिए आप क्या यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर? ये डबल आपके पास जो एम्परसेंड सिंबल आता है. Check your answer and it's saying correct. So we started with a correct one. So that's a good point. Number two, type the operator that means or. So or operator आपके पास होता है इंटर की के ऊपर जो की है ये सीधा सीधा इसको कहते हैं पाइप्स. सही, तो दो पाइप्स आप डालते हैं. दिस इज कॉल्ड और ऑपरेटर and that's correct as well. For number three, we get when both sides of an operator have to be true to pass the test, what operator is it? Type it. वो कौन सा ऑपरेटर होता है जिसके दोनों साइड क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए उसके ट्रू होने के लिए. यानी जितने भी उसके ऑपरेंड्स हैं वो ट्रू हो तभी आपको ट्रू रिटर्न होगा. तो वो कौन सा ऑपरेटर है? वो है हमारे पास एंड ऑपरेटर. ये चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले चैप्टर 13 की वीडियो देख लें, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं. फिर एक्सरसाइज आपको और अच्छे से समझ में आएंगी. सो चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. Next up, we have number 4. When if either or both sides of an operator are true, the test passes. What operator is it? यानी सारे ऑपरेंड्स के अंदर कोई एक भी ट्रू हो तो आपको ट्रू रिटर्न होता है. वो कौन सा ऑपरेटर है? तो दैट इज और ऑपरेटर एंड इट्स सेइंग करेक्ट. ओके, सो ड्रैग एंड ड्रॉप है. बहुत सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं तो अब आपको पता है कि ये कैसे करना है. सो फॉर नंबर 5 वी विल हैव टू डू create the first line of an if statement that tests whether both are true. First name is Bugs and last name is Bunny. So हमने चेक करना है कि if drag the pieces to create the first line of an if statement that tests whether both are true. First name is Bugs. अच्छा जी, तो if start of parenthesis then first name is equal to Bugs. Both are true, so and लगा लेंगे and last name is equal to Bunny. ठीक हो गया. Parenthesis close and then curly braces start क्योंकि first line है. And check your code against correct one. Direct I got it right नहीं करना है, यहाँ से चेक कर लें. So yes, हमने भी यही किया है. So now you can say I got it right. Next up we have number 6, for which we got autocomplete. Acha. So the problem is code the first line of an if statement that tests whether both are true. A has the same value as B and C has the same value as D. दोनों ट्रू होने चाहिए तो क्या होना चाहिए? एंड ऑपरेटर होना चाहिए. कंपेयर करना है हमने ए को बी से और सी को डी से. सो ऑटो कंप्लीट है. इफ स्टार्ट ऑफ पैरेंथेसिस ए इक्वल्स बी, फिर एंड ऑपरेटर दोबारा से and C is equal to D, close parenthesis, close the parenthesis, then
start the curly braces, and it's saying well done. Next up, fail-safe coding है. Code the first line of an if statement that tests whether either or both are true. सही है, कोई एक भी true हो तो कौन सा है, और ऑपरेटर यूज करेंगे. A has the same value as B, और C doesn't have the same value as D. Doesn't have. तो यहाँ पे A और B के बीच में इक्वल ऑपरेटर, और C और D के बीच में हमने not equal to operator use करना है. So if space start of parenthesis A is equal to B, or C is not equal to D, parenthesis close space curly brace, and it's saying well done. बहुत अच्छे से कर रहे हैं यार हम. Number 8, quote the first line of an if statement that tests whether both are true. Both are true means and operator use होगा. A first variable equals a second variable and also equals a third variable. Both are true. A first variable equals a second variable and also equals a third variable. अच्छा जी, so मैं लिखूंगा if first variable मैंने लिया A equals B and A equals C. खुद से मैंने वेरिएबल्स कंसिडर कर लिए. वो कह रहा है कि भाई दो कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए, तो मैंने एंड ऑपरेटर डिसाइड किया. अब फर्स्ट वेरिएबल, तो फर्स्ट वेरिएबल मैंने कंसिडर किया कि A है, इक्वल द सेकंड वेरिएबल, तो इक्वल टू B मैंने लगाया, खुद से सेकंड वेरिएबल डिसाइड किया, एंड ऑल्सो इक्वल द थर्ड वेरिएबल, और यही फर्स्ट वेरिएबल जो कि A है इक्वल हो थर्ड वेरिएबल के जो कि मैंने C नाम रखा, उसका आंसर इनकरेक्ट. Next up, we have code the first line of an if statement that tests whether either is true. Whether either is true, a variable is less than or equal to a particular number, or whether that same variable is greater than or equal to a second number. Okay, so if a variable is less than or equal to a particular number, less than or equal to, let's say 5, or either है ना, so or whether that same variable is greater than or equal to a second number. Same variable greater than or equal to second number, that is 10. ठीक हो गया. Check your answer and is saying correct. Next step, number 10. Code the first line of an if statement that tests whether number 1, name is either Ace or Bud, and 2, age is greater than 60. Okay. So if name is equal to Ace, और दो केसेस है ना नेम के अंदर, नेम इज इक्वल टू बड, एंड अब यहाँ पे एंड लगाना है, एंड एज इज ग्रेटर देन 60, एंड एज इज ग्रेटर देन 60, parenthesis close curly braces start. Check your answer and it's correct, but we would have to enclose this in parenthesis as well. ऐसा करना है. So याद रखिएगा, we'll come back to this one. Okay. Quote the first line of an if statement that tests whether name is Ace and age is greater than 60, or number 2. अच्छा, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है ना कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये लिखो पूरा, और 2, name is Bud. Okay. If name is equal to name is Ace and age is greater than 60, so इसको इनक्लोज करो एक कंडीशन के अंदर, और फिर एक और कंडीशन लगाओ, नेम जो कि क्या हो, इक्वल हो किसके, बड के. ठीक हो गया. सो इट शुड बी करेक्ट एंड दैट्स इट. ओके. Number 12. Quote the first line of an if statement that tests whether number 1, name is Ace and age is greater than 60, number 2, name is Bud, or age is under 6. Okay. So if name is Ace
It should be inside a string. Okay. And age is greater than 60. And age is greater than 60. Control Z. और ऑपरेटर को यूज करते हुए नेम इज इक्वल टू बर्ड और एज इज अंडर 6 यानी लेस देन 6। ठीक हो गया, तो इसको बंद किया और ये हमारे पास एक दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इनके अंदर भी दो हैं तो हमने इसको भी इनक्लोज करना है। एंड चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। आप लोगों को समझ आया भाई? अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन में नेम इज एज एंड एज इज ग्रेटर देन 60। तो मैंने नेम को कंपेयर किया एज से और एज को कंपेयर किया 60 से, और यहाँ तक हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गई। फिर वो कह रहे हैं और, तो और लगाया, नेम इज बर्ड, नेम को मैंने बर्ड से कंपेयर किया, और एज इज अंडर 6, सो अंडर 6 मतलब 6 के अंदर अंदर, सो लेस देन 6 मैंने लगाया, और ये एक और कंडीशन तो उसको भी अलग पैरेंथेसिस में इनक्लोज किया था। नंबर 13। अब 30 seconds के अंदर ये करना है। वी आर बाउंड विद टाइम नाउ। Quote the first line of an if statement that tests whether both are true. A first variable equals a second variable and also equals a third variable. ओके जी, सो ए बी सी वाला सीन है कि ए बी के भी इक्वल हो और ए सी के भी इक्वल हो, whether both are true, सही है। so if a equals b and b नहीं, a equals c as well, space देकर ये, and check your answer, and it's saying well done, you done it in 11 seconds. Next step, number 14. We got 45 seconds for it. Quote the first line of an if statement that tests whether either is true. A variable is less than or equal to a particular number, or whether that same variable is greater than or equal to a second number. So if, let's say, a is less than or equal to, let's say, 5, or a is greater than or equal to, let's say, 10. So let's check it out. We got it in 21 seconds and the time was 45 seconds. Okay. Next step, number 15. We got 55 seconds for it. Code the first line of an if statement that tests whether, number 1, name is either Ace or Bird, and number 2, age is greater than 60. ओके, सो याद रखिएगा कि पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन को क्लोज करना है। सो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी स्टार्ट हो गई कि नेम इक्वल हो एज के और या नेम इक्वल हो बर्ड के। ये एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। स्पेस देंगे और ऑपरेटर को यूज करेंगे, एंड को यूज करेंगे, एंड को यूज करेंगे, और दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि एज इज ग्रेटर देन 60 हो। तो यहाँ से हमारी इफ स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। और स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। अच्छा, number 16. We got 55 seconds for it. Quote the first line of an if statement that tests whether, number 1, name is Ace and age is greater than 60, or number 2, name is Bud. So if first condition, name is equal to Ace and age is greater than 60. So this is number 1, or name is equal to Bud. This is condition number 2. Okay, space, curly braces start, check your answer, and we got it in 30 seconds. Okay, for number 17, we got 90 seconds. Quote the first line of an if statement that tests whether, 1, two conditions hai, name is Ace and age is greater than 60. Okay, so if first condition, name is equal to Ace and
age is greater than 60. So it's condition number one. Now or operator, name is bird, तो इसको भी curly braces के parentheses के अंदर close करना पड़ेगा क्योंकि दो conditions है. Name is bird or age is under 6 यानी less than 6. इसको बंद कर लें और मेन को भी बंद कर लें और स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. 46 सेकेंड्स के अंदर कर लिया. Number 18. For number 18 we got 90 seconds as well. Code an if statement that tests whether दो conditions है. Number one, A is less than B or okay, A is less than B or C is greater than D or C is equals to E. If so, display an alert. Okay, so if first condition A is less than B, A is less than B, so इसको curly braces के अंदर क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. और क्योंकि अब इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो इसको इनक्लोज कर लेते हैं. C is greater than D or C is equal to E. सही है. और अगर वो कह रहा है ऐसा हो तो क्या करना है आपने, दो स्पेसेस देकर अलर्ट यस इट इज कुछ भी कर सकते हो. कर्ली ब्रेसेस और सॉरी पैरेंथेसिस सेमीकोलन और यहाँ से कर्ली ब्रेसेस. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. Number 19. Declare two variables and assign them number values. Okay. So let's say const A assign 5 and const B assign 10. दो variables बनाए और उनको number values दे दी. If the first variable is less than the second variable or greater than the second variable, if the first variable is less than the second variable or greater than the second variable, okay, if first variable is less than the second variable, that is B, or greater than the second variable, or A is greater than the second variable, display an alert. ये क्या बात हुई यार, alert yes, semicolon, curly braces, close, run it, and is saying yes, so we can say I got it right. Number 20. Declare two variables, const A, assign one of them your first name and the other one your last name. So John and const B Doe. आप अच्छे अच्छे नाम लिखिएगा वेरिएबल नेम्स. A B X अच्छे नहीं हैं, सेल्फ एक्सप्लेनिंग नहीं है, तो अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्टिव नाम दीजिएगा ताकि उनका मीनिंगफुल नाम दीजिएगा वेरिएबल्स को ताकि वो क्लियर हो. कोड टू प्रॉम्प्ट्स आस्किंग फॉर योर फर्स्ट एंड योर लास्ट नेम. अच्छा जी, प्रॉम्प्ट्स के थ्रू नाम लेने हैं. सो प्रॉम्प्ट फर्स्ट नेम सही है और इसको पैरेंथेसिस में क्लोज कर लें. इसी तरह इसी को कॉपी करके हम, या कॉपी नहीं करते शायद ये छेड़खानी कर लें, प्रॉम्प्ट करके, वैसे नहीं करेगा, हमने ही डिसाइड करना है, लास्ट नेम और इसको कोटेशंस में और पैरेंथेसिस में बंद करें. Code two prompts. If your answer match the two variables, display an alert. Declare two, assign one of them your first name and your last name. Code two prompts asking for your first name and last name. So गलत हो गया, कंट्रोल X किया बल्कि कंट्रोल Z किया, कॉपी किया, पेस्ट कर लिया. इसको कह देते हैं LN और इसको कर लेते हैं FN. सही यूज़र से आ रहा है और यहाँ से हम अपने ही असाइन कर लेते हैं जो कि था डो और यहाँ पे था जॉन डो. सही है.
और यहाँ से ये कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि कंपेयर करना है। इफ़ योर आंसर मैच द टू वेरिएबल्स डिस्प्ले इन अलर्ट। If fn equal first name and ln equals last name, so display an alert that's saying ज़बरदस्त। ठीक है, एंड यहाँ आके कर्ली ब्रेसेस और यहीं से आप कर सकते हैं run it। so you would say run it and it's asking for first name, so the first name is John and the last name is Doe. Okay, and it's saying Zabardast. So our code is running absolutely right. I got it right. बिल्कुल आप click कर सकते हैं and we are back with question number 10. Code the first line of an if statement that tests whether। दो conditions हैं जो कि हमने उसमें एक curly brace नहीं लगाया था, sorry parenthesis नहीं लगाए थे, तो इस वजह से वो हमारा गलत हो गया था। So if नेम, लेकिन नेम के अंदर क्या है, दो कंडीशंस हैं, तो मल्टीपल पैरेंथेसिस हमें लगाने पड़ेंगे। नेम इक्वल्स एस और ऑपरेटर को यूज करते हुए नेम इज इक्वल्स टू बड, और यहाँ से कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को क्लोज, देन एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए एज इज ग्रेटर देन 60, ये कर लेते हैं सेकंड कंडीशन को क्लोज। ठीक है, तो पूरा ही हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो क्लोज हो गई है, और यहाँ से स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एंड इट्स सेइंग करेक्ट। वेल डन, सो वी गॉट ऑल द एक्सरसाइजेस करेक्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।